Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I have a new tutorial for you. This will be in Urdu and in English. I hope you're going to enjoy this tutorial because I absolutely loved creating this look. So आज मैं आपके लिए tutorial लेके आई हूँ थोड़ा सा different मतलब makeup wise and बहुत ज़्यादा detail again है, तो आपको सारा कुछ मैं बताती हूँ कि क्या क्या किया मैंने. So I started off with the eyebrows, and what I'm doing is I just brushed through them, and I didn't want the eyebrows to be too heavy, so I'm starting on the outer edges of the eyebrows and just defining the detailing with the Kat Von D brow gel. So I need to actually grab a few more products for the eyebrows because I feel that sometimes the Kat Von D gel is a little bit too heavy to work with. So I did want to purchase a few more products, so I will be getting those soon. तो यहाँ पे आप पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लाइट आईब्रो चाहिए. जेल से ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, रन आउट हुई भी हूँ तो बस लेके नहीं आई, तो इसलिए जेल से ही ये लुक कर दिया था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ब्राउज कर रही हूँ, एंड देन जो इनर कॉर्नर्स है उनको मैं पाउडर के साथ करूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना हो जाए. So this one, let me know what you think of my model and who she looks like. Obviously, I have put it in the thumbnail as well, but it is she's absolutely gorgeous, mashallah, and she looked like Kim Kardashian. And you know, there's so many looks been done on her. I wasn't intending to create like a look where she looks really like Kim K, but I think eventually when I did put her look up and things like that, she really did look like her. So I thought it was absolutely stunning, mashallah. So I've gone in with my P. Louise base now, so carefully I'm just carving underneath the eyebrows, and then once I've got the product where I need it, I'm going to brush it all onto the whole eye and then stamp it out. So eyebrows को मैंने carve कर लिया P. Louise का base के साथ, and इसको carve करके and then पूरे eyelid के ऊपर ही इसको stamp करके and इसको pat down कर दूँगी कि मतलब flat हो जाए and इसमें कोई वो blending सही हो जाए इसकी. तो यहाँ पे आपने बहुत टाइम लगा के करना है इसको. Now, occasionally there will be differences in eyebrows and things like that. Now, when I do my videos, like I say, I'm just showing you what I do and how I do them. Nothing's going to be perfect, so I'm sorry if, you know, the eyebrows look a bit different or something is wrong with the tutorial and, you know, it doesn't look absolutely perfect. But I'm hoping you still get to pick up details and products and techniques and things like that. And then you can go ahead and obviously when you do it, you do it perfect. But, you know, just be a little bit mindful in comments because I know a lot of people sometimes say that, you know, the foundation is too light and things like that, but really when I've applied the foundation I've already matched it up and I've normally color corrected, which makes the model look a bit darker, and then when I add my foundation obviously it does look like I've applied a lighter color, but normally I've matched it up to the neck and the base already. And I know that once I've added my contouring and things like that, it's going to make, you know, it's all going to match up. So anyway, we've gone in with Makeup by Mario palette here, and I've just taken that light matte shade, a brown one. So what I'm going to do is I'm just using, this is a Real Techniques brush, and I am doing a separate video, definitely doing it soon. I'm in need of buying a few new brushes and stuff, so I thought I'll just wait until I've got those. So I'm stamping this on, and what I'm doing is I'm taking it all the way across to the end of the eyebrow. So I'm pulling it outwards. I'm not using tape this time. You can use tape for this as well, but I didn't want it to be too harsh or too sharp, so I'm just blending this out. Tapped it on first and now I'm just blending it out quite lightly. So this is quite a light color that I've started off with. So पहले मैंने ये light brown सा shade यूज़ किया है, इसको stamp करके लगा रही हूँ पहले क्योंकि नीचे product wet है, and then इसको ऐसे blend करते करते बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ eyebrows को जो outer corner है. So यहाँ पे आप tape भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा sharp नहीं चाहिए था ये look, सिर्फ outwards लेके जा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा blended हो, इसलिए tape नहीं यूज़ की. So एक light color यूज़ कर रही हूँ, matte color है ये, and आप देखें कि center of the eye में शुरू कर रही हूँ लेकिन एक angle से बाहर तक जा रही हूँ. सो नेक्स्ट मैं एक थोड़ा सा डार्क कलर लेके जाऊँगी सेम ही पैलेट से. आप ऑब्वियसली पैलेट आपकी अपनी मर्ज़ी है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन कलर्स आप देख लें कि मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा कलर लिया है, एंड अगेन उसी जगह पे शुरू कर रही हूँ एंड इसको ब्लेंड करके इसको बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ. सो पूरे आई पे नहीं जा रहा, इसको आउटवर्ड्स लेके जा रही हूँ. So this one is basically I've gone in for a darker color from the same palette. Now you don't have to use the same palette. Any matte colors that you've got will work here. You can even do this in different colors as well. So now I've gone in with a darker shade, same brush, and I've just applied the color
over the same actual colour, but I'm keeping it slightly lower than the first colour, just very, very slightly, but I'm going to blend it all out afterwards anyway. So again, I'm just going in with my colour, and look at the angle that I'm applying it. So I'm not, normally I would come in up over the crease. So this one I'm taking outwards, so the angle is actually going outwards. So that's how I actually did this look. So now I've gone in with my very first colour again, and I'm just blending out the edges just to make sure that there's a nice smooth blend. So यहाँ पे मैंने जो पहला कलर यूज़ किया था उसी के साथ इसकी थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ और उसको आगे लेके जा रही हूँ. So now I'm just going in this matte, it was like a matte white, off-white colour. So I'm using just a slightly bigger flat brush, and I'm just going to stamp this on all onto the lid now where I don't have any colour. So यहाँ पे मैंने ये लाइट सा कलर लिया, ये भी मैट कलर था, तो इसको मैंने अप्लाई किया एक बड़े से फ्लैट ब्रश के साथ. बस थोड़ी सी आसानी हो जाती है, कलर पे ऑफ थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है. एंड इसको प्रेस करके तो इसको लगाई जा रही हूँ लिड पे अभी, एंड थोड़ा सा उसके अंदर लेके जा रही हूँ जो मैंने ब्लेंडिंग की हुई है ना, तो फिर सारा ब्लेंडिंग इवेंचुअली अच्छा लगता है. So you're just going to stamp this on and get your colour. So I went in about 2 or 3 times to get the colour payoff, because sometimes with these lighter colours you have to go in a little bit more just to make sure that you can see it. So I'm pressing it on. You can see I'm pressing the colour on everywhere where I need it. Now I've gone back in with my very first colour, and I'm just blending out the edges just to make sure everything is even and blended out. So now जो पहला कलर मैंने लिया था very lightly, बस थोड़ा सा ब्रश के ऊपर लिया है, and इसको ब्लेंड करके तो इन सारे कलर्स को ना थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ. फिर भी फोकस यही है कि बाहर की तरफ ये कलर चाहिए रहे. नाउ एक छोटा सा डिटेलिंग फ्लफ़ी ब्रश लिया है, इसके ऊपर फिर एक थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, एंड इसको बिल्कुल बेस पे अभी लगा के तो इसको आउटर की तरफ पुल आउट करके लेके जा रही हूँ कि इसकी आई ना थोड़ी सी लंबे लेंथ में मैं लेके जा रही हूँ. So now I've got a very small detailing brush. This is actually from P. Louise. I can't remember the number, but I will, like I said, mention all these brushes in another separate video. And eventually I will try and mention the brushes in each video as well. So apologies for that. But what I've done is I took that dark colour and I put it right at the base of the eye, and I pulled it outwards. Next I'm going in with Fenty Diamond Bomb, and I'm just going to use my finger, and I'm just going to tap this over the neutral colour, the very light colour I did on the lids. And I go in a few times, you have to go in a few times, but this is an amazing product. If there's one product you need to get, this is one of them. It's just so beautiful and gives you such a lovely effect. तो ये मैंने फेंटी का डायमंड बॉम इस्तेमाल किया है, फिंगर से ही अप्लाई करें 2-3 दफ़ा करती हूँ, लेकिन इसका जो लुक है ना ग्लिटर है ना शिमर है ना मतलब बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल माशाल्लाह लगता है. लेकिन 2-3 दफ़ा आप करें, एक ही दफ़ा में मतलब इसका पिगमेंट इतना नहीं आता. सो इसको मैं बिल्डअप करती हूँ. सो यहाँ पे मैंने हम निकाल लिया है. पहले रिंग लाइट नहीं थी, अभी रिंग लाइट मैंने बाय द वे ऑन कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो गया था. So I'm just got my ring light on now. Before I didn't have the ring light on. So what I'm going to do is I'm taking the black now, any black eyeshadow, and it's an angled eyebrow brush. And what I'm going to do is stamp on the black eyeshadow like I'm doing an eyeliner. So pretty much in the shape that I want. So I'm keeping it quite thin, and I'm pulling it outwards a little bit. And then I'm going to blend this out with a darker brown. तो यहाँ पे आपने ब्लैक आई शेडो से एक आईब्रो जो जेल लाइनर का जो ब्रश होता है एंगल्ड, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. और उससे मैं ये जो ब्लैक आई शेडो है इसको स्टैम्प करके लगा रही हूँ, जैसे मैंने आई लाइनर लगाना होता है, जैसे नॉर्मली आप लिक्विड आई लाइनर लगाते हैं. तो इसको आउटर कॉर्नर से ही मैं कर रही हूँ, लगा रही हूँ. आप देख लें, इसकी आहिस्ता आहिस्ता शेप बिल्डअप करके लेके आ रही हूँ. बहुत ही परफेक्ट नहीं करना, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मुझे शेप चाहिए इसको लेंथ में लेके आने के लिए आई को, तो आप देख लें मैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कर रही हूँ. So really take your time when you're doing this. I'm really stamping it on. I'm not dragging it out too much, only once I've got some product. And I haven't even got the point as such, I'm not looking for that at the moment. And then I've gone in again with my very small fluffy brush, which is a detailing fluffy brush. And I've gone in with the dark brown that I used initially. And now all I'm doing is buffing this whole thing out. But I'm keeping my brush where I want it, and I'm elongating the eye a little bit.
सो यहाँ पे मैंने एक छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया है जो डिटेलिंग वाला होता है। इसके ऊपर डार्क जो पहले हमने आई शेडो लगाया था वही थोड़ा सा आई शेडो लेके तो इसको अभी ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देखिए कि मैं आउटवर्ड्स जा रही हूँ, ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, इसी लाइन के ऊपर मतलब इसको छोटा छोटा ब्लेंड करके ना एंड आउटवर्ड्स लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मैं बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेकअप है इसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अभी बेस के टाइम आ गया। यहाँ पे आप अपने थोड़ा सा जो शेप है वो लेके आ सकते हैं। So now I'm just cleaning up the eye with a wet wipe, and what I'm doing is just shaping the eye very slightly. So I'm just, you know, where I want it to end. So you just have to be careful here. I'm not pulling too much, I'm being gentle with the skin and things like that, but I have lifted it, if you can see. So normally you could have used tape here, but what I'm doing is just using my wet wipe just to kind of like create that shape for me. And then once I finish the makeup I go back to the eyes and then I kind of like create the shape a bit more as well. So you'll see what I do in a few minutes. So inside the eyes I just went with a brown eyeliner. I think this one is from Peaches and Cream, but any brown eyeliner. I didn't want anything too harsh, I didn't want anything too light, so I didn't want like a nude and I didn't want black this time. I was going for like a brown, so I just went for a brown pencil. So eyes के अंदर हमने brown eyeliner लगाया, pencil use किए, Peaches and Cream किए ये. Then I was actually going in for a green underneath the eyes. So what I did is before I actually applied any of the base, I went in this. This is from Jaclyn Hill. It was like a dark green. I wanted actually a slightly lighter green, but I wanted to go in with a darker one first and then go on top of it with the lighter green. So I went in first because this one actually there is quite a bit of fallout. So I actually went in. So all I'm doing is just lining the underneath the eyes. So यहाँ पे मैंने green eyeliner लगाना था, आई शेडो लगाया ग्रीन, ये थोड़ा सा डार्क कलर का है। इस दफ़ा मैंने सबसे पहले मतलब मेकअप करने से पहले लगा दिया था क्योंकि नॉर्मली ऐसे डार्क कलर्स जब मैं करती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट हो जाती है एंड वहाँ पे काफ़ी मैसी हो सकता है, तो इसको पहले मैंने लगा लिया बेस करने से पहले। ये जैकलिन हिल का पैलेट है, लेकिन ओबियसली आप कलर्स अपने पसंद के लगा सकते हैं अगर आप कोई और कलर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें मैं थोड़ा सा इसको ना पुल आउट कर रही हूँ कि आईलाइनर जो पहले लगा हुआ ना उसके नीचे से लेके जा रही हूँ। So you can see I'm just pulling out that green underneath the eyeliner I've already done. So I'm kind of like connecting it a little bit and pulling it outwards. Now for the base, I've gone in with my vitamin C serum. So this time I'm using the one from La Roche-Posay. You can use any one you want. You don't have to use vitamin C. You could go straight in with moisturizer, then your primer and things like that. But I find it really makes a difference if you do these steps with the makeup. सो स्किन केयर के लिए पहले मैंने विटामिन सी लगाई है, फिर मैंने ये आई क्रीम लगाई है। ना प्रोडक्ट ब्रांड वाइज आप जो मर्ज़ी है यूज़ कर लें, जो आपके बजट में है, ये जो आपको सूट करता है, जो आपको पसंद है। मैंने ला रोश पोजे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं किसी और के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। इसी में बार बार बोलती हूँ कि हर चीज़ मेरे ब्रांड्स पे ना जाएँ क्योंकि मैं उनको चेंज करती रहती हूँ। सो यहाँ पे आपने बस ध्यान रखना है कि आप हर स्टेप के बीच इनको फ्यू मिनट्स दें कि ये ड्राई होते रहे। फिर मैंने सन क्रीम लगाई है और हर स्टेप के बिटवीन मैंने टाइम दिया है। Just make sure you're allowing time in between, either use a fan or just give it time. I was in between normally just doing the eyelashes and things like that, getting them ready, so I normally leave a bit of time. Then I colour corrected and I'm using my Makeup Forever Essentials palette here just to colour correct a little bit. We were going to go darker on the skin. My model wanted to be a little bit more tanned as well, so I just went in with the same colour that I normally use. She didn't need that much colour correcting, but obviously it's just the way I do my makeup as well, and I think it works, so I was quite happy with doing this. And then I realised I forgot that I didn't actually put my primer on, so I went in with my primer at this point because I thought I've not covered the whole face yet, so I went in with Benefit Professional. प्राइमर मैं भूल गई थी, तो इस स्टेज पे मुझे याद आ गया था, तो मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ द फेस पे थोड़ा सा प्राइमर लगा दिया था। बेनिफिट का प्रोफेशनल है ये, एंड इसको राउंड सर्कुलर मोशंस में करके ना सही तरह स्किन के अंदर मैं जज़ब कर रही हूँ। फिर बाकी की जो ऑब्वियसली मैंने कलर करेक्टिंग की थी इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। So here I'm just blending out obviously the last of the color correcting that I had. So the eyelashes I had already cut and put glue on, so this is where I normally add them on. I will do a separate video, आपको दिखाऊंगी separately कि eyelashes में कैसे measure करती हूँ, कैसे काटती हूँ, कैसे लगाती हूँ, ये वो सारा कुछ। Normally इन फोटो शूट्स में थोड़ी सी मैं बिजी होती हूँ एंड वो टाइम नहीं होता कि मैं सारी ये डिटेल्स दूँ, लेकिन कोर्स में मैं आपको दिखाऊंगी। So I went in with my NARS Longwear and I have used the shade Punjab again.
So this shade I think works really well on a lot of people, but obviously when I add in my concealers, my lighter concealers, my powders and things like that, I can kind of like change the tone a little bit, whether I want it a bit darker or lighter. So that's why I went in with this shade, and I love this foundation. I think it's amazing. And it goes on really, really nicely. So I'm just stamping it on for now, and then I'm going to use my beauty blender. तो यहाँ पे मैंने रियल टेक्निक्स की ब्रश के साथ ये नाज की फाउंडेशन लगाई है. नाउ ये काफ़ी कलर मेरे पास, मैंने पहले भी बताया मैं हर कलर नहीं रखती, सो ऑब्वियसली मुझे उसको मतलब सही करना पड़ता है कि मैच हो जाए. सो मुझे पता होता है कि जब मैं कॉन्टूरिंग करूँगी, मैं कंसीलर लगाऊँगी, कौन सा कलर मैं लगाऊँगी एंड कैसे मैं इसको थोड़ा सा इसकी शेड को ऊपर नीचे कर सकती हूँ. सो इसलिए यही शेड मैंने यूज़ किया है. इससे थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मेरी मॉडल ने, मैं अपने आप को भी बोल रही थी कि कि मुझे टैंड थोड़ा सा लुक दे, तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं. सो मैंने अप्लाई किया है ब्रश के साथ, एंड देन मैंने थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ किया था. वो मेरे ख्याल वीडियो में नहीं शायद आया, लेकिन किया मैंने सारा, दोनों यूज़ किए थे. सो कंसीलर मैंने टार्ट का शेप टेप यूज़ किया है, जो बहुत ही अच्छा कंसीलर है. इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी जो कवरेज है वगैरह, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो इसको मैंने काफ़ी ऑब्वियसली हाईलाइटेड है कि हैवी लुक दे रही थी बेस वाइज एज वेल. हैवी मतलब देखने में हैवी नहीं लगता, लेकिन ऑब्वियसली फोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह उसके लिहाज से ना अच्छा आ जाता है. ना जहाँ पे मेरा ग्रीन लगा हुआ उसके नीचे मैंने रखा है इसको. So very carefully you're going to add on your concealer. I went for Tarte Shape Tape this time, which is an amazing concealer. I am going to do a must-have videos, must-have products videos soon. I'm just sorting my kit out, and I just want to sort everything out and have all the products hopefully to be able to show you as well. So I'm applying this in all the areas that I want to highlight, and I'm keeping this underneath the green. You can see you have to be a little bit careful here now, because normally I can go right up to the eyes, but I'm not doing that this time. So center of the face, down the nose, the forehead, the chin area, things like that is where I'm adding this on, and I'm just using just like a flat brush just to apply the product. So once I've got that on, I normally move on to my contouring, and I'll let the concealer sit there, because that actually makes a huge difference as well. So that makes sure that obviously everything is absorbed in and it starts setting a little bit, and that's when I start blending it out. So थोड़ी देर आपका कंसीलर ऐसा रहे, एंड देन मैं साथ में अपनी थोड़ी सी कॉन्टूरिंग करूँगी. मेकअप फॉरएवर का एसेंशियल्स पैलेट जो फाउंडेशन है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड आहिस्ता आहिस्ता करके, बहुत ज़्यादा भी नहीं हैवी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा, जैसे सॉफ्ट कॉन्टूरिंग की है लेकिन काफ़ी फिर भी ज़्यादा की थी मतलब है. एंड इस तरीके से आपका शेड थोड़ा सा ना आप उसको सही कर लेते हैं. मतलब अगर सिर्फ ये एक फाउंडेशन होती है आई डोंट थिंक सही लगती, लेकिन ये सारे स्टेप्स करके ना तो फिर फाउंडेशन अच्छी लग रही है. So when you start contouring and things, I'm doing a soft contour. It's not a heavy contour, but still blended out, but enough for you to be able to see. Now, when you're doing your contouring and things like that, that's what adjusts the color of your foundation. So here by the way, I'm just taking shots of what I put on Instagram and TikTok and things like that. So in between, this is what I do as well when I'm doing my shoots. So what I'm going to do now is just blend out the contour, and this adjusts the final color for you as well. So this is where you can go heavier or lighter and things like that, or I could change the tone of the contour I use just to make sure that the foundation at the end looks right and matches and looks right on my bride or my model. So again, we're still just doing a few shots, but I couldn't cut these out because I still wanted you to see what I was doing, so I've left them in. तो यहाँ पे बस हम थोड़े से शॉर्ट्स ले रहे हैं जो मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे लगाती हूँ. अगर आप मुझे नहीं फॉलो करें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें. So what I'm doing now is just using my brush, and I'm blending this out. So you can see I'm focused more on the outer perimeter of the face here. So out of जो फेस का perimeter है उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. काफ़ी इसको मतलब फोरहेड पे भी नीचे लेके आ रही हूँ. जो लाइन पे बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रही क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस लाइटली उसको ब्लेंड करके ना तो हर चीज़ को मतलब एक ब्लेंडेड लुक देना है मैंने. ऑब्वियसली प्रॉपर ब्लेंडिंग थोड़ी देर तक होगी जब मैं कंसीलर कर दूँगी. So I like more of a blended contour. I don't like seeing the harsh lines, so that's just the way I like to do it. And I go over everything with powder contour as well, so you'll see that in a few seconds. So I'm just doing the nose very gently as well.
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको कैसी लग रही है। ऑब्वियसली मुझे पता है हर दफ़ा मैं हर चीज़ परफेक्ट नहीं करती, ना ही मैंने कभी दावा किया कि मेरी हर चीज़ परफेक्ट है, बस कोशिश करिए जो मैं करती हूँ आपको साथ साथ दिखा दूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स या प्रोडक्ट्स या किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बट मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल का स्प्रे यूज़ किया है। अगर वो नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हाइड्रेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे नहीं करी लेकिन आप सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको सेट करना कर, जैसे गर्मी है ज़्यादा, तो आप बीच में एक सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी कंसीलर की। सो I've just sprayed it with some professional setting spray, or you can use like a hydrating MAC Fix Plus or something like that. That just means that basically the reason I'm using that is because I want to hydrate the skin again while I'm blending this out, because obviously the product has dried a little bit. There is a point of letting it sit there and dry out, but to blend it out properly you need to still rehydrate it again. You can use a setting spray if you want to, because the Professional is a setting spray, but I'm talking about like Charlotte Tilbury or something a bit more, that's a bit more that sets your makeup a bit more. If like the if it's really hot and things like that, then I would maybe use a setting spray in between at this stage, so that is actually helping me set the makeup in between all the stages that I'm doing. So all I'm doing is using a brush and I'm tapping it in. I sometimes use a beauty blender, but most times I will use this brush from Real Techniques, and I just prefer the way it blends out when I use a brush. And what I'm doing is I'm tapping it into the skin. I'm not sweeping anywhere. I'm just tapping, 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 and really being careful with that green as well. Some of that green will go, obviously, but I'm not fussed about that because I am going back in with it again. तो यहाँ पे हमने ब्लेंडिंग कर दी है। कंसीलर की आपने बस टैपिंग मोशन से ही करना है। ग्रीन थोड़ा सा जो आपका है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि फिर मैंने करना है। यहाँ पे मैंने क्रीम ब्लश इस्तेमाल किया था। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड का था, क्योंकि मैं फ्रेंड के साथ शूट करती हूँ। उसका पता नहीं अब कौन सा है, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई भी पिंकी सा क्रीम ब्लश आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने इस स्टेज पर लगा देना है पाउडर से पहले। So before powdering is when you're actually going to add in your cream blush. If you're going to use it, you don't have to, but I think it really does make a big difference. I used a cream blush, but this was my friend's who I was doing a shoot with, and I can't for the life of me remember what it was now, so apologies, but you can use any that you want. So you would put the cream blusher on before any powdering. Just make sure you blend it out. So these days it's all about heavy blush and things like that, so it went slightly heavier than what I needed to, or what I normally would do, but the end result was absolutely fine. So now before I do my baking, I'm using my small beauty blender and just tapping on my Laura Mercier loose powder all over the areas that I've used the highlighter. I'm just going to tap this in until it completely blends away. I find this works for me so well before I do any baking. Otherwise the baking for me just becomes really cakey, and I don't like the way it looks, to be honest with you. सो पूरे एरिया पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था लोरा मेसियर का पाउडर लेके, तो इसको एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प है ये ब्यूटी ब्लेंडर, एंड उससे थोड़ा थोड़ा करके पाउडर लगा रही हूँ हर उस जगह पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट की थी। इसके बाद फिर मैं ये है कि मैं अपनी बेकिंग कर सकती हूँ, एंड इस तरीके से मुझे लगता है कि केकी नहीं होता। सो काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि केकी हो जाता है जब वो करते हैं पाउडर ज़्यादा या बेकिंग करते हैं, तो ये तरीका ट्राई करके देख लें। So I'm just using a powder puff, and I'm going in with my Huda Beauty powder now. So this is in the shade Pound Cake, and I'm tapping this on, and you can see I'm taking it up the nose a little bit as well. So this is just to contour, to help me contour the nose a little bit more as well. So ये मैं चीक्स पे भी लेके जा रही हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा फेस को शेप देने के लिए, एंड आइज़ के नीचे आप देख लें कि पाउडर पफ से ही लगाया, एंड थोड़ा सा नोज़ की साइड्स पे भी जा रही हूँ कि उसकी कॉन्टोरिंग में जब मैं करूँगी ना तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। I'm just going to lay the powder down, and I'm going to keep that there until I actually do my powder contour, and then I'm going to buff this away. So I don't let it sit for that long. Now इस स्टेज पे ऑब्वियसली अंडर आइज मैं करती हूँ, क्योंकि जो भी फॉल आउट होगी फिर जब मैं पाउडर को ब्लेंड करूँगी वो चली जाएगी। सो थोड़ा सा जो डार्क ग्रीन था उसको दोबारा लगा रही हूँ कि इसका ग्रीन वो आ जाए, एंड देन एक लाइटर ग्रीन लूँगी जो एक जूवियस प्लेस का पैलेट है। ऑब्वियसली आप पैलेट जो मर्जी यूज़ कर लें, तो उसको ब्लेंड कर दूँगी। So I've just gone back in with my green. So because my powder's laid down, I do all the under eye at this point, because if there's any fallout I can push it away when I take away the powder. So
I've just emphasized that dark green again a little bit, but now I'm going in with a fluffy brush and I've gone in with a lighter green. So this is the green that I actually wanted, but I didn't want to go in with just the lighter green because I don't think I would have got the effect. I wanted that gradient effect of dark to light. So very carefully I'm using a small fluffy brush. I'm using the palette from Juvia's Place, which had a really nice pigmented green in it. And I'm adding this on underneath. So I'm going quite heavy with this. So it's quite, I don't always do this, but I'm going quite heavy and quite low down with the green, but I'm still keeping it quite, I'm going into the inner corners and then I'm elongating it. You can see I haven't got much on my brush now, but I'm just pulling out that green very slightly. So green को मैं लगा के inner corners की तरफ भी थोड़ा सा लेके गई हूँ इसका shape वो रखने के लिए. So गोल shape नहीं लेके जा रही eyes को मैं लंबा कर रही हूँ थोड़ा सा. So brush की मदद से जब product बिल्कुल कम है तो आप देखें कि edges से भी मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, मतलब राउंडेड शेप नहीं दे रही. सो आप देखिए यहाँ से भी मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आ रही हूँ और ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. So just adding in a little bit more in the inner corners, bringing it downwards, and then on the outer corners taking it upwards a little bit, really shapes your eye. And it's a very small amount of product you're using and it's very small movements, and it might not look like much now, but it really makes a difference to the final eye shape that you're trying to create. So I've not gone for a rounded shape. I could have elongated this so much more as well, but I didn't. But you know, for this particular look I think it was enough. So now I'm just contouring with my MAC Studio Fix, and I'm just doing this very lightly and not too heavy either. So MAC का Studio Fix पाउडर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा कॉन्टोरिंग को करने के लिए. थोड़ा सा इसको अलग कलर मिल जाता है, थोड़ा सा वार्मथ मिल जाती है चेहरे को. So now I need to buff away all the powder and things like that as well, but before that I'm just going to do the nose contour. So I've taken a small fluffy eyeshadow brush, a little bit of powder, and I'm really kind of like working that into the nose now. And then when I do my powdering and things like that, I'll be able to make it a little bit lighter and a little bit more blended. So nose contour के लिए बस छोटा brush ले लिया, fluffy eyeshadow brush, and थोड़ा सा उस product लगा दिया. And then जब मैं अभी यहाँ पे blending करूँगी powder के साथ तो वो सारा सही लगेगा. So I'm just using my MAC Studio Fix here in shade NC20, and I'm just buffing away all the extra powder now. I'm stamping it into the face, so I'm not, it might look like I'm swiping, but I'm not. I'm stamping it in first, and then the extra product is being swiped away. And this is where you start getting like your blend correct now. So I'm taking it up to the side of the nose as well, if you can see what I'm doing, and then I'm stamping it over and taking it all the way outwards to give that lifted look. And I'm blending away, like, you know, the harsh contour, any of the blusher and things like that. So यहाँ पे आपने बस स्टैम्प करते करते आपने ब्लेंड कर देना. आप देखें नोज़ के साइड पे काफ़ी ज़्यादा मैं पाउडर लेके गई हूँ, क्योंकि जो बाकी का वो जो ब्लेंड था ना, कि उसकी जो कॉन्टोरिंग वगैरह वो भी ब्लेंडेड लगे. And there are no filters here, by the way. She looked absolutely stunning. She was flawless, mashallah. She looks absolutely stunning. So I'm just going over very, very gently, very lightly now with the powder that I'd already used on the nose, and I'm just kind of like defining it a little bit. So थोड़ा सा definition इधर लेके आ रही हूँ, but बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि obviously मैंने powdering की है. Inner corners पे मैंने Doll Beauty का थोड़ा सा highlighter लगाया, not too much, just a little bit of Doll Beauty highlighter on the inner corners. Then इतना हमने पाउडरिंग कर दिया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, so obviously मैं यहाँ पे MAC Fix Plus फिर यूज़ करूँगी and hydrate कर दूँगी. So now that I've powdered loads, I hydrate the face always. So I've used my MAC Fix Plus. You could use one that has a bit of glow in it and things like that. You know, there are so many products that you can use, but I just add this in, and then I've gone in with my Doll Beauty highlighter again, and I'm just adding the highlighter on. I do add another highlighter in a minute as well, and I'll show you that. So top of the cheek areas, यहाँ पे मैंने highlighter लगा रही हूँ. Now, yes, this is a lot of makeup, and sometimes, you know, I do get comments saying, oh my god, that's too much makeup, she didn't need it. She particularly doesn't need it. I'm not ever saying that my model or my bride or whoever needs that much makeup, but what I'm trying to do is show you just different techniques. I mean, to be honest with you, if you go onto TikTok now,
you'll see people doing this kind of makeup and this amount of makeup for everyday wear, where they're, you know, just showing you how they're doing makeup and things like that. So I'm actually showing you, because this is long lasting makeup, this is for bridal, this is for photo shoots, you know, it's for that kind of thing, not for a daily basis. So obviously, you know, no one really needs this much makeup, but it is just a way of doing makeup. And I do other forms of makeup as well where I'm not using as much, but at the moment this is what I'm showing you. So, you know, I just wanted you guys to know that, you know, you don't always have to come and like attack me in the comments about the amount of makeup, because, you know, if you don't want to wear that much, don't wear that much. You know, you can follow the techniques and use a lot less and still achieve a really, really beautiful look that will probably last you all day as well. So it's just personal choice, but I'm just trying my best to show you. Anyway, I've listed the products for the lips and things like that. So I went in with the blusher and then I've started the lips. सो मेकअप में बस ये बोल रही थी कि ओबियसली काफ़ी ज़्यादा लोग कई दफ़ा बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा मेकअप है, ये वो सारा कुछ, लेकिन ये है ज़्यादा मेकअप, लेकिन ब्राइडल के लिए है, लेकिन नॉर्मल मेकअप के लिए, एवरीडे के लिए नहीं है, फोटोग्राफी इस टाइप की चीज़ों के लिए। ओबियसली मैं ये बोल रही थी कि अगर आप टिकटॉक पे वगैरह जाओ तो नॉर्मल डे टू डे मेकअप लड़कियाँ ऐसे कर रही होती है, इतना हैवी मेकअप करके। तो मैं हैवी ओबियसली एवरीडे के लिए नहीं करी, आपको ब्राइडल लुक्स दिखा रही हूँ, इस टाइप की चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग, जो आपको पूरा दिन। अगर मैं एक नॉर्मल मेकअप करूँगी मेरी ब्राइड्स के ऊपर तो कुछ घंटे बाद ही जब मैं चली जाऊँगी ना तो उसका मेकअप सही नहीं होगा, फिर कंप्लेंट्स आएंगी। सो यू नो उसको बैलेंस करना पड़ता है। फाइनल यहाँ पे टचेस कर रही हूँ। I'm just doing some final touches now. I always go over the eyelashes and clean them up with my liquid eyeliner. This one is from NARS, anyone you can use, and I'm just giving a very, just on the base of the eyelashes, just a little bit of depth, no particular eyeliner as such. And then I always go in with my pencil eyeliner. थोड़े से जो इनर कॉर्नर्स है इनको थोड़ा सा डीपन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए था कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शार्प लाइन हो, लेकिन बस थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए ना आहिस्ता आहिस्ता करके यूज़ कर रही हूँ। ये जो फाइनल स्टेप्स होते हैं इसी से आपका मेकअप ऑब्वियसली फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लॉट का डस्ट यूज़ कर रही हूँ, स्पार्कलिंग डस्ट नाइस का। प्लीज़ मुझे शेड नहीं पता, नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर है ऑब्वियसली, आई डोंट नो, लेकिन इसमें शेड्स काफ़ी ज़्यादा है। जो भी शेड आपने उठाना आप उठा ले, क्योंकि seriously they're all nice. The shade I don't know what it is for this Inglot sparkling dust, but it's one of those that really gives you a major pop. But I don't know the shade. It's come off the box and I don't know what it is, I'm afraid. But there are 4 or 5 shades I think, and they're all amazing and they all look stunning. So at the end we just used a little bit of some Fenty lip gloss because I just wanted a bit more of a glamorous look and I wanted to do lip gloss. I mean, you can see she looks absolutely stunning, amazing. And yeah, do tell me if you do think she looks like Kim Kardashian, because I think she does actually here. And just the way when she poses and does that thing with her eyes. तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लिप ग्लॉस ऐड की है। ये हमारा फाइनल लुक था तकरीबन। फिर मैंने इसके बाल किए हैं, बालों का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। So I have got the hair tutorial coming for you as well. It was very quick, very simple hair that I did. This was the final look. I hope you guys have enjoyed this tutorial. I hope you've managed to learn something, and if you have, please do give me a comment, like and share my videos. आपको अगर पसंद आई है वीडियोस, लुक पसंद आया, बार बार मैं बोल रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए नए नए लुक्स लेके आऊँगी। कोर्स भी शुरू कर रही हूँ इंशाल्लाह सून, एंड इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और फिर आपके लिए आगे वीडियोस वो लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर एवरीबॉडी। बाय बाय।